Good morning, everyone. Good morning. Good morning. Good morning, Nilesh. Good morning, Tosif. Keep the charts clean. We'll start in 2 minutes. Good morning, Varun. Are you an Indian session long, sir? No, no, I'm not. जिसको भी कोई भी डाउट्स है, प्लीज बता दो स्टार्ट करने से पहले.
गुड मॉर्निंग योगेश। ये स्टोरी सब क्या लिखा है? कल एक कमेंट आया था आपके पोस्ट पर, is talking about basics and mechanical stuff in regarding to trading. So I don't know किसने जवाब दिया। कमेंट पर एकदम सही बात जस्ट गेमिंग करके अकाउंट आईडी थी, खतरनाक रिप्लाई दिया। उसके बाद यूज रिप्लाई के ऊपर इस बंदे ने फिर से रिप्लाई दिया लाइव स्ट्रीमिंग से, ओनली डाउट्स लाइव स्ट्रीमिंग से सीखने को नहीं मिलता करके बोला। उसको भी रिप्लाई दिया, उसके बाद उसका कमेंट ही नहीं दिखा। गुड मॉर्निंग इमरान, गुड मॉर्निंग उस्मान, गुड मॉर्निंग वेंकट। Guys, one more person yet to come, waiting for him. ओके, जो भी डाउट्स है बता दो, उसके बाद स्टार्ट करेंगे। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द चैनल वीपी। गुड मॉर्निंग केशव। अगस्त्य, तेरे को इनविटेशन देके बुलाना पड़ता है मेरे को, क्या बात है यार। सही है, एक ही रह गया था अभी। लेट्स स्टार्ट गाइस। नहीं नहीं, मैं ही लो बात कर रहा हूँ। आई डिडंट ड्रेन माय एनर्जी सो। स्टार्टिंग विद डेली टाइम फ्रेम। एक चीज नोटिस करना, ओके, सतर्क हो जाओ। डेली टाइम फ्रेम पे विक जनरेट नहीं हुआ। मैथमेटिकल कैलकुलेशंस आप लोग ही करोगे। आई जस्ट स्टार्ट विद द प्रोसीजर्स, दैट्स इट। एट द करेंट पॉइंट ऑफ एक्शन ये मेरा डिमांड जोन ऑफ एक्शन है।
सो इस डिमांड को मार्कआउट करते हैं, डिमांड के साथ इंड्यूसमेंट जनरेटेड था, इंड्यूसमेंट हमारा सप्लाई की तरफ एक्ट करेगा, इस सप्लाई मूवमेंट एक्शन के साथ कंटिन्यूटी, इन द कंटिन्यूटी जो मैं प्रीवियस डिमांड रेंज ऑफ एक्शन है that will act as the movement plan. With the movement plan, market यहाँ पे break करके continuity में गया था. With the continuity, 150% rejection. With the 150% rejection, what are the major things that needs to be checked? The supply range. At this point of action, ये मेरा supply act करेगा. इस supply के साथ retrace कितना होगा? जो कि मेरा प्रीवियस सप्लाई है उतना ही रिट्रेसमेंट होगी, उसके साथ कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी में मूवमेंट प्लान ऑफ एक्शन जो मेरा प्रीवियस सप्लाई है वही एक्ट करेगी. 100% क्लोजर के साथ मूवमेंट है, सो वी विल मार्क आउट 150% एंड 200%. जैसे ही 150% 200% मार्कआउट किया, मार्केट ने कितना रिट्रेस किया, जितना मेरा प्रीवियस डिमांड एक्शन प्लान यहाँ पे जनरेट हुआ है उतने का ही मूवमेंट यहाँ पे दिखा के कंटिन्यूटी में स्ट्रक्चर बिल्ड की थी. With the continuity of structure build, what is the plan of action that will be taken under the consideration? जो मेरा previous supply है, that previous supply will act as my current and उसके साथ 100% rejection. Right, with that 100% rejection, market ने क्या क्या 4 दिन पहले market had created a circumstantial move of a retracement price of action. उस point of interest में what will be the first step of action? जो मेरा previous demand है, right? So मेरा previous demand act करेगा from the wick range of action point. Wick range of action point से 200% rejection लिया था, right? With the 200% rejection, what did market tend to do? Market continued the breed. When the market continued the breed, what is the step of actions that we will be taking? The previous demand allocation will act as my current. In this scenario, this is the point of action one that which will be taken under the consideration. इसके साथ continuity में 200% marking. Excuse me. With the 200% markout, what did market tend to create the movement plan as per the previous or as per the current action plan? So what are the next steps that will be taken under the consideration? Entire movement plan of action. When there is an entire movement plan of actions, what are the major things that will be taken under the consideration points? 150% rejection perspectives will come into the play. Once the 150% rejection will come into the play, what are the structures that needs to be worked on? The structure is of buying pressure and the setup allocation. In this perspective, we had a 150% rejection. With this 150% rejection, build out. With the build out, do the mathematical numbers. Movement कितना generate होते हुए दिखेगी आपको at the first place. In the first place of scenario, जो मेरा entire supply range of action है, that will be current. With the current plan of action, continue of 100% and breakthrough. So we will be marking 150% and 200% range. Once the 200% range is completed post 150% break, what are the next steps that needs to be taken under the consideration? 4 hours. In 4 hours perspective, short allocation was taken under the consideration through the previous, with the previous allocation body point range, with the body point range, a liquidity calibration. In this scenario, the point of action one was taken under the consideration to the next post the wick, the break of structure allocation. With the break of structure allocation, न्यू बिल्ड आउट के साथ मार्केट ने यहाँ पे एक लिक्विडिटी कैलिब्रेशन जनरेट की थी. लिक्विडिटी कैलिब्रेशन वाज टेकन अंडर टू द प्रीवियस विद द प्रीवियस एक्शन प्लान कंटिन्यूटी. जैसे ही लिक्विडिटी कैलिब्रेशन यहाँ पे रीजनरेट होते हुए दिखा था, व्हाट आर द स्टेप ऑफ एक्शंस दैट नीड्स टू बी टेकन अंडर द कंसिडरेशन? द प्रीवियस मूवमेंट विल एक्ट एज माय करंट, राइट? The current point of action के साथ body closure के साथ continuity. In this continuity, what will be my first action plan which will be taken under the consideration? A movement which will be acting as my previous. In this scenario, the previous action point was of the same green liquidity calibration candle. So this will be the markout. With the markout, what did market tend to do? Market tend to break and continue.
right? With the break and continue 100% के साथ 150% rejection due to minimality. With the minimality is a zone of actions, what are the next steps which will be taken under the consideration? Do we have a rejection? Yes, definitely we have a rejection at 150 and 200. Suppose that action plan, what are the next steps? The previous supply till the retracement point will act as my current. In this scenario, we don't have a surplus retracement, so we will be looking for single candle retracement point. With the single candle retracement point trade allocation, with the trade allocation 150% से यहाँ पे retracement generate होने दो, उसके बाद 200% का targets. So this will be the plan of action of current 4 hours movement. With the current 4 hours movement plan of actions, what are the next steps which needs to be taken under the consideration? Through the previous right of indication. Previous right of indication case identify करते हैं, we'll identify that in 1 hour. Mathematical numbers will be taken in consideration of you guys. You guys will let me know which are the point of interest which has been taken. Okay. With this, what is the major things that needs to be identified at the 1 hour point of interest? With the 1 hour point of interest, कल के दिन में इंड्यूसमेंट के साथ S2B2 के साथ भी मूवमेंट जनरेट होते हुए दिखी थी. With S2B2 there was a S2B1 setup. With the S2B1 setup, market had continued the movement. With the movement plan of action, for intraday allocation, we will look from the previous. With the previous point of action, market में कितना retrace हुआ है, जितना मेरा inducement zone of action है, उतना का ही retracement यहाँ पे generate होते हुए दिखिए, उसके साथ continuity. In the continuity spectrum, post allocation of the demand, 100% breakthrough. With the 100% breakthrough, 200% rejection. Once we get a 200% rejection allocation, what is the next steps which will be taken under the consideration? The circulating supply movement. With the circulating supply movement, market में यहाँ पे हर एक circulating supply में जितने भी लोगों को बिठाया था सबको बार किया, उसके साथ movement has continued, right? So with the continuity of the movement, what is the plan of actions which will be taken under the consideration of 1 hour? The previous will act as my current. In this scenario, this zone of action which has been in the intact point, what will be the action? Do we have a minimality? Yes, we have a minimality. So when there is a minimality, what is the major action point of range that will be taken under the consideration? The consideration point of action will be 150%. In this range of action, हमारे पास 150% की rejection दिखने को मिली है, right? With this rejection point, what are the major things that comes under the consideration through the previous 200% allocation, जो कि हमारा match out है, with the match out range of action, the continuity. In the continuity, demand कितना allocate हुआ था movement short के तरफ, जो मेरा previous allocation point है, that will act as my current. In this current range of action, जो मेरा previous demand है, उतने का ही rejection लेके continuity में थी. Continuity में, what are the major circumstances which will be taken under the consideration? The previous point of interest will act as my current. In this point, what do we allocate? We allocated a movement. Again, we had a minimality with the minimality zone of action. 150% rejection. In this state of actions, what do you notice? We notice a breakthrough of 150% rejection and continuity in today's circumstances. Right? जब continuity in today's circumstances दिखने को मिली है, 200% breakthrough आया है, break के साथ continuity में है, it's following a swing trade allocation for the next. जब swing trade allocation follow हो रही है next point of action के लिए, what are the next steps that will be taken under the consideration? The next step action plan will be taken under the consideration of the previous, with the previous current marking through the retracement and demand कितना generate होते हुए दिखा है हमें यहाँ पे, जो मेरा previous demand allocation point है, that will act as my current. At this scenario, this is my point of interest which will be taken under the consideration. With the consideration built, continue, minimality zone of action created. With the minimality zone of action, what is the next plan? 150% rejection.
right? At this point of action, we have a 150% rejection circumstances. Yes, we do. With the 150% circumstantial rejections, what are the next steps that will be taken under the consideration? 200% coverage and continuity post the retracement plan of action. So my previous supply will act as my current range. Right? So each and every level of action has been taken under the consideration to the previous, with the previous, the current. So at this stage, what are the major point of interest that I'll be working over here at the current point of range? हम लोग 15 minutes में आएंगे for the allocations. At the 15 minutes range of actions, what are the major steps that will be taken under the considerations? Currently, market has given the movement with the high calibration range, जो कि हमारा high calibration range ये point of interest में थी of the swing trade. With the swing trade of action, market यहाँ पे एक inducement create करके S2B2 setup के साथ हम long पे बैठे थे. With this long plan of actions, what are the next steps which will be taken under the consideration? The next steps which will be taken under the consideration is we need a selling pressure. Once we get a selling pressure and S2 setups के साथ हम short के लिए देखेंगे. At the current range of actions, what are the steps that needs to be taken under the precisions? The previous action point of high calibration range will act as my new. With that, continuity post the inducement range. With the inducement range of action, 100% rejection. With the 100% rejection zone, we will calculate the new. With the new action plan, we will look for the next. With the next action calibration, market 100% rejection लेके continuity में है. So on the continuity, the structure will look for the new point. With the new point of action, 150% rejection. With the 150% rejection, 200% target. Any doubts in gold? In on 4 hours chart liquidity calibration candle कौन सा वाला बोल रहे हो? टाइम बता दो इमरान, यूटीसी के हिसाब से बता देना टाइम. पहली बार इंडियन मार्केट्स में फोमो दिया मेरे को. कुछ बात नहीं है. लेट इट बी हर्षद, चलता रहता है. गुड मॉर्निंग रंजत. We took that because it is of the same size or any other reason. Liquidity calibration will always. I said you yesterday, no, Imran. If the movement action plan has given this big candle, right, in liquidity calibration, the revenge candle will also be the same. Always. Okay. So in this scenario, two types of liquidity calibration will be taken under the consideration. One is next candle creation. With the next candle creation, that will be acting as the first liquidity calibration point.
Second liquidity calibration point will be in the zone of action. You will see a pressure where there is no body, a small indecisive candle. Uska next फिर से एक indecisive and the completion. This are the two types of liquidity calibration what you will see in the markets. But coverance ये 30 minutes के अंदर हो जाना चाहिए. उसके बाद इसके अंदर खेलते रह जाने दो, प्रॉब्लम नहीं है. बट कवर हो जाना चाहिए, विक जनरेट हो जाना चाहिए, उसके बाद इस रेंज में खेलने दो, दैट्स नॉट एन इशू. बट कवर होना चाहिए. 30 minutes to max 1 hour. ठीक है. एक 600 पॉइंट्स मिस हो जाने से कुछ नहीं होगा. रहने दो. तो वी कैन स्टार्ट विद BTC. Clear, no doubts, no doubts. Okay. This is my POI range. With the POI range, inducement range of action के साथ buying pressure allocate हुआ था. With the buying pressure allocation, market had tend to create a movement action plan. With the movement action plan breakthrough, internal liquidity point कहाँ पे है? At this range of action, this will act as my internal liquidity point. With that liquidity calibration, demand will be taken under the consideration. Demand consideration के साथ what is the next steps? We'll allocate it with S2B1 setup. S2B1 setup के साथ point of interest zone will be taken under the consideration. Body closure is inside the demand range. What are the next steps which will be taking? ये हमारा supply है. Supply के साथ rejection कितना लिया? जितना मेरा previous supply है, that will act as my current demand. With the current demand action plan, what are the next steps which will be taken under the considerations? The continuity. In this continuity movement plan, what are the major things that will be need to be taken under the consideration? The considerated point of action is taken under to the previous. With the previous action plan, what do we see? We have a rejection and continuity. In the rejection and continuity, the markout, this will be my previous demand. With the previous demand current, with the current structure, market had given a break and continue. With the break and continue, we have a minimality zone of action. With the minimality zone of action, 150% range. With 150% range and 200% closure, what are the next steps? The previous allocation point will be taken under the consideration. With the previous point of allocation, the current movement. Right, with this step of action, what do we see? We have a break and continue. First we will look for the scenario one circumstances. With the scenario one circumstances, the closure, with the closure continuity, 150% rejection. Right, what is the second circumstances that you can look over here? The second circumstances you can look in perspective of to the previous, जो कि इसके साथ continuity में breakthrough दिखाया. Right, with the breakthrough, if you notice, where did market tend to take the rejection exactly from? Through the previous point of interest. With the previous point of interest मैं mark out करूंगा. What do we see? Exact closing point. With the closing point, the two scenarios is matching. What are the next steps which will be taken under the consideration? Next step of consideration, mathematical number आप लोग करो, मैं नहीं करने वाला.
Okay, so with this plan of interest, the two major things that needs to be taken under the consideration is in 4 hours. With the 4 hours plan of action, the market has tried to created a group with the group continuity. Right, in this plan of movement, what are the first steps which will be taken under the consideration? The movement one of the previous demand with the previous demand, current movement with the current movement action plan, the breakthrough with the breakthrough 150% rejection. With the 150% rejection, यहाँ पे supply कितना generate होते हुए दिखी है मेरे को. At the current stage of action, we'll be taking the range of action of the previous. With the previous range of action, reallocation. Point of interest one, with the interest one, 200% rejection मिला है हमें. With the 200% rejection, what do we look for the next? The next zone of action will be taken under the calibration of to the previous. This is not taken under the consideration at the current range because it's in the same zone of action. There is no breakthrough and continuity may mera previous plan will be the current. In this scenario, this is my candle which will act as my next in the 4 hours with the 4 hours action plan. Reallocation, break, retracement. Retrace कितना होगा? जितना मेरा previous demand action है, that will act as my current retracement from the supply converted into demand. With the supply converted into demand, market had taken a rejection and continue. So 100% closure. With the 100% closure, 200% rejection. With the 200% rejection, what did market tend to create? Market created a threshold with threshold is to be even set up and continuity towards the down. With this continuity, what are the next plan of actions that needs to be taken under the part and continuing? आप आओगे 1 hour पे. At 1 hour circumstances, what are the major consequences that needs to be taken under the precision points? At the precision point of action, हमारा 4 hours का target hit हो चुकी है. With that continuity, in this continuity point of action, the first range of action will be acting as my previous, with the previous point one taken under the consideration. With that, the next. In this scenario, 150% closure with 150% closure continuity. छोटा सा POI range. With this POI range, जो मेरा previous demand action plan है, that will act as my current. We have a minimality zone of action. When there is minimality zone of action, market will take a rejection of 150% and 200%. With this, what are the next steps that we'll be taking under the part? The next step of actions will be taken under the consideration to the previous. So in this scenario, the movement action plan of retracement jo hogi, supply converted into demand. With the supply converted into demand, movement of surplus will be acted as to the previous. In the previous plan, the supply is my current. With the current plan, continuity. In this current plan of actions, what are the steps that needs to be taken under the consideration? The entire movement will act as my current because there is a break of structure. With the break of structure, 100% closure. With that continuity of the movement, the next target allocation will be at 82,000. So this is my 1 hour. So 1 hour होने के बाद come down to 15 minutes. In 15 minutes, what is market indicating you? Market is indicating you POI with the POI inducement with the inducement is to be one setup के साथ long. So if you want to look into the perspective of to the previous, we have a minimality zone of action. With the minimality zone of action, redrop 150% and 200% rejection. Any doubts in BTC, guys?
In BTC, can you please show which swing to consider for MC2 in 1 hour and 15 minutes? Definitely, Nilesh. एक second दे दो. 15 minute swing of action plan कैसे select करोगे? Circulating supply इस point of interest में है, correct? इस point of interest के साथ swing low कहाँ पे होगा? The swing low will act as the my 200% demand range. With the 200% demand range, what is my swing high acting point? The swing high acting point will be at the first 100% closure, जो कि 79,692 पे है, right? उसके साथ the retracement point of action will be 78,660. Post completion of that, your swing low will remain 200% because this is a circulating supply zone. So what will be the next plan of action? The next swing high of 100% completion and the retracement point of 79,305. This is for 15 minutes. And for 1 hour, you can look into the precisions of the previous range of action कहाँ पे build out है. At the current scenario, first action plan will be taken under the consideration of BOS with this 78,455.27, 79,997 will be a swing high. उसके साथ 78,951.46 will be your retracement. Okay. And major targets के लिए, your swing low will act as the current scenario of 75,052. Swing high will act as in the current scenario of 77,976. And retracement point 75,832 का levels होगा. Okay. मिमिक ट्विक करना. मिमिक ट्विक करने के टाइम पे आपको मिलेगा स्विंग हाई एज 78,313 एंड स्विंग लो एज 76,736. वो होना चाहिए आपका 1 आवर का एक्शन प्लान टुवर्ड्स द लॉन्ग. Yes, we don't change the swing. Swing low will not be changed. Only the swing high and retracement points gets changed. Okay. क्या फायदा, वो हमारा मैथमेटिकल नंबर के जोन के अंदर ही है. कोई नहीं. मेरे को फोमो कब होगा पता है? FOMO, I'm not talking about execution FOMO. I'm talking about the movement FOMO, right? Movement FOMO मेरे को तब होगा जिस दिन ये मार्केट जो है डायरेक्टली ये जो लेवल के ऊपर ओपन होगा तब. जब तक वो नहीं होता है, नो.
51,921 के ऊपर जिस दिन गैप अप ओपन होती है उस दिन मेरे को फोमो क्रिएट होगी चार्ट देखने में, तब तक नहीं। ओके, लेवल सेम है, फॉलो करके चलो। एंड फॉर दिस प्लान ऑफ एक्शन आप लोगों को मैथमेटिकल कैलकुलेशंस किस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट से लोगे, स्विंग हाई स्विंग लो रिट्रेसमेंट, उसका टारगेट अभी हिट हो चुकी है, उसके साथ कंटिन्यूटी में मूवमेंट एक्शन प्लान है, तो योर स्विंग लो विल बी दिस, योर रिट्रेसमेंट विल बी दिस, एंड योर स्विंग हाई विल बी दिस। That will be your current plan of actions. All the new members, जो भी डाउट है पूछो। And all the old members, 1.5 years of back testing, 1.5 years of forward relay bar testing. With that, 1 month of live analysis, then come with a small value to execution. With the small value to execution, build the confidence, post that, execute the trade following a proper risk to reward. Good morning. Wanted to ask this in yesterday evening session, but that did not happen. Gold UTC time zone 10th April are the 5:15 and 5:30 candles. New demand allocation after completion of 200% supply. If yes, then after the retracement should be the demand. B, if yes, then after the retracement should be the demand be reallocated on 16:15 candle with 16:45 as minimality. We are talking about this zone. The circumstantial plan movement is not at 200% supply at first place. No? It was at 150% surplus supply. When there was a surplus supply, the movement action plan is taken under the consideration of just the demand, not by allocating it by each and every candle. In this scenario, the completion was into the first part because the movement was bullish. With the bullish, the completion of surplus 200% supply was pending. When 200% supply is pending, why will I look for a minimality and look for an execution to the previous? And there was no selling pressure in this zone at first place.
So this setups also work in NQ? Yes, it does. दुनिया का कोई भी चार्ट लेके आओ, वर्क करेगा. लिक्विडिटी जोन ऑफ एक्शन चार्ट, जिसमें लिक्विडिटी हो, वॉल्यूम हो. जिसमें वॉल्यूम नहीं है उसमें डिफरेंट सेटअप बिल्ड होता है. सेकेंड फ्राइडे है. न्यूयॉर्क सेशन तक शांत बैठो, हरी बरी में एग्जीक्यूट मत करो एंड एसेट्स मत दो. महीने का एवरी सेकेंड सैटरडे यू वोंट सी अ मूवमेंट, अ बिग वन. आज का दिन का मूवमेंट हो चुका है, राइट? So in this scenario we have already captured 450 pips, but wait, any examples without volume chart? The chart which sees only with this dashes. Thank you, sir. One more question. Really just want to learn all this. Please do. And are you Sonu? जो 3 अकाउंट ब्लो कर गए, 4 तो अकाउंट में है. Is that you? मैंने भी आज तक आइडेंटिफाई नहीं किया, but if you want, I can showcase you few. नहीं, this has volume, sorry. This is the no volume zones. यहाँ पे liquidity ही नहीं है. So in this places, no execution. Don't select this kind of charts. Okay. So आपका जो मैसेज आया था ना, वो मैसेज के हिसाब से हम यहाँ पे काम नहीं करते हैं. पहले सीखो, उसके बाद कमाओ. While learning, earning is not possible. 4 अकाउंट ब्लो किया हो, अभी भी समझ में नहीं आया, मतलब समझ लो. While learning, earning too. Okay, Imran.
मैं इमरान बोला, सोनू नहीं। So to start, learn all the videos in YouTube channel. होम टैब में जाओ, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट करके एक चैनल है, मीन सेक्शन है, उसे देखो। उसके बाद सप्लाई एंड डिमांड का सेक्शन देखो। उसके बाद लिक्विडिटी एंड वॉल्यूम डीओ का सेक्शन देखो।
Good morning, Sahu. हार नहीं मानोगे ना तुम? नो. That guy scammed me. Hmm. कोई नहीं, जब वापस जाऊंगा तब वापस रिटर्न कर दूंगा. That's right, Imran. Please do. Thank you for the needful. जल्दी भेजो अगस्त्या. बहुत टाइम है. टाइम नहीं है. कौन आ रहा है? All the new members, जो भी doubt है, please do ask. In the continuation to the early question on the gold chart in yesterday's morning session video at 105. Okay. That was a different screening. That was of LTD's intraday traders का screening था. So that screening was in perspective of intraday. जिस पे video explanation हुआ. We are talking about this moment, right? This was acting as 150% and this is 200% target. So that screening was in perspective of intraday. In the video, what you are talking about. So this is a swing trading setup. रिवाइंड करके देख लो. जो ब्लैक मार्किंग्स में था वो आपको क्लियर कट दिखेगा. द सेम लेवल्स वर टेकन अंडर द कंक्लूजन्स. If you are a trader who can't hold more than 30 minutes, 40 minutes, do it. Do follow the levels of 15 minutes. In this scenario, the target is hit.
Some days back we discussed that gold is nearing completing monthly demand as it was some 25 points away, and we were expecting it to complete that. Both structural volumes, other formation guided us that it may not cover the remaining and it will reverse. नीलेश वो cover हो गया. What are you saying? It didn't cover. It covered monthly. What do you notice? And if you notice yesterday's video, there was minimality of 10 points, 100 pips. That is totally fine for me. The answer went out daily gold on third 200% previous demand. Then we picked prior demand 200% completion. We took complete prior demand 150% rejection. Do we keep on changing the levels of the demand that breaks multiple changes in demand? That breaks multiple changes in demands को थोड़ा explain कर दे सर. Yesterday video में this question is well explained. Usma, that is taken under the consideration on two parts. वीडियो के हिसाब से वो सेटअप को फॉलो करो. जब तक MC टारगेट्स हिट नहीं होते डायरेक्शन सेम ही रहेगी. ठीक है उसमें. जितने भी लोग एक्सनेस में प्रो यूज कर रहे हो मत यूज करो. मैनिपुलेशन है प्रो में, क्योंकि हाई वॉल्यूम ट्रेड्स विद स्मॉल कमीशंस कट होते हैं तो वहां पे मैनिपुलेशन ज्यादा होता है. यूज स्टैंडर्ड अकाउंट्स टू बी इन द सेफर साइड. Am I clear for everyone? स्टैंडर्ड अकाउंट्स यूज करो एक्सनेस में.
Sumit, why do you want to pay commissions when you can do it without commissions? BTC में जीरो यूज कर लो, प्रॉब्लम नहीं है. But for major gold trades, always use standard. यहाँ पे मैनिपुलेशंस नहीं होगी क्योंकि इट शुड फॉलो द चार्ट. बट प्रो में देखोगे विक क्रिएशंस ज्यादा है उसमें इन सिनेरियो टू स्टैंडर्ड. I have not taken trades, but in demo account I noticed fees more than the commission. Fees is only commission, Sumit. That is the trap, no? Standard account, you don't have to pay anything. That was about standard. If you notice, there is no deduction from the account. The fees is just a calculation of a spread. How did you understood the commission in demo account at first place? That is not fees, that is a spread valuation what it showcase.
Imran, are you in trade? Message from Varun. Sir, any alternative Exness to get started with? XAU USD at safer, as I think Exness not legally approved in India, like some prop firm trading account. We don't use prop firm. From where 3100 or 3120. इमरान MTSL 3180 पे रखना. Sorry, system trailing 3180 पे रखना. MTSL 3193 पे रखना. 3106. S2B1 सेटअप के साथ लॉन्ग किया. ग्रेट. Crossed major milestone of $7,500. Good job. Keep it up, Samal. From $20 to $7,500 in 10 days. Good job. 2000 से 7 लाख.
Great work, Samarth. Good, Samarth. Keep it up. Great going, Samarth. Thanks, Samarth. Nice job. Good man. You started with $20, Imran. This is the same person who didn't believe in the start that this is not possible. But good going, Samarth. Happy for you. He's just two trades away for 100K. All the new members, whatever doubts you guys are having, please do ask. वर्षा नाम क्या है ये स्क्रीनशॉट जो भेजा है तुमने मेरे को? शिव रामचंद्र.
ये जितने भी लोग YouTube में मैसेज कर रहे हैं ना, ये सब आपके आदमी लोग हैं। उनको हटाओ, उसके बाद देखो कि कितना पानी में। भाई साहब, भाई प्रिसाइसफुली अगर बोलना चाहूँ मिस्टर शिव रामचंद्र, इसमें से एक का भी नंबर मेरे पास नहीं है, ना इनका चेहरा मैंने देखा है। फेंकना है तो लिमिट में फेंको। $20 से $7,500 कौन कर सकता है? अगर सच बोलूंगा ना, 20,000, सॉरी, $20 से। छोड़ो यार, क्यों? What a day. Haters are good in life. Sir, should we just observe and backtest for 22 days, or it is okay to execute trades in demo? उसमें 1.5 years का बैक टेस्ट करो, उसके बाद गो चार्ट यूज करो, 6 months का फॉरवर्ड रिले बार करो, राइट? सो एक डेट पे डालो, उस डेट के साथ मिनिमल स्लो स्पीड के साथ मूवमेंट दिखाओ, राइट? उधर अलोकेशन देखो, वर्क हो रहा है कि नहीं हो रही है, राइट? ये होने के बाद 1 महीने की लाइव टेस्टिंग, लाइव एनालिसिस करो लाइव मार्केट्स पे। उसके बाद स्मॉल वैल्यू लेके आओ कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए, राइट? उस स्मॉल वैल्यू ही आपका रियल वैल्यू में कन्वर्ट होगा इन द टाइम ऑफ बिल्डिंग योर कॉन्फिडेंस। ओके? यस, इफ यू वांट, बीच बीच में ट्रायल के लिए एग्जीक्यूट कर सकते हो, but definitely demo accounts won't change your mindset because it's not your real money. So yes, execution के लिए you can look into the perspective of demo accounts. Okay? Sometimes haters make you feel alive. बोल दो सर, $20 से $1 लाख कर चुके हैं। $7,000 अभी तक हजम नहीं हो रहा है, 100K बोल दूंगा हो गया। एंड उसके ऊपर मैं ये बोलूंगा कि लाइक 2974 से मेरा ट्रेड चल रहा है, वो बोलेगा फेंक रहा है। एंड उसके साथ अगर मैं उसको बता दूं मेरा ट्रेड अभी करेंटली 2500 पिप्स के साथ चल रहा है, देन तो भूल ही जाओ। दिस इज द एंट्री पॉइंट, दिस इज द ट्रेड व्हाट इज रनिंग। बताओ। That's why I stopped posting my order executions. As someone said, I am sitting in sales office.
Anyways, good. Thank you, Mr. Shiv Ramchandran. Thank you so much. You made my Friday. चल तेरे लिए भी दुआ ही मांग लूंगा। वह खोसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। ये किसने बोला था मेरे ऑफिस में बैठ के ट्रेड कर रहे हो करके, इमरान? मेरे को ही नहीं पता रहता है मैं एक मोमेंट कहाँ पे रहता हूँ अगले दिन कहाँ पे। And thank you everyone for the new success. We have sold over 40,000 copies of Blueprint to Wealth. 0 to $1 million worldwide. Asian continent and Indian subcontinents will be launching very soon. Thank you for the love. Last week इसी chat पे बोला था, don't remember the name. Okay. Say something new, sir. मंडे से यहाँ पे एक बोर्ड आएगा, राइट? इस बोर्ड पे रहेगा 365, राइट? 365 एट द करेंट स्टेज आज के दिन को मिला के वी हैव कंप्लीटेड 215, ओके, मिलियनर्स। एंड यहाँ पे रहेगा लाइव स्ट्रीम एंडिंग सून। दैट्स द न्यू थिंग। मंडे से रहेगा वो बोर्ड। Stream will be there for next 30 minutes. Whatever doubts you guys are having, please do ask. अनब्रेकेबल कितना सोल्ड हुआ?
Unbreakable worldwide, we have sold more than 3 lakh copies. Too soon. Usma, this number of 215 is of not days. TTS has generated 215 million years. Okay, so long way to go. So 150 more million years needs to be generated. This will at least take around next 3 to 4 months. Not too soon. 3 to 4 months is more than enough for you to get hold of. How do you remember everyone's name? You are my enemy. See you. It depends on the capital.
So to start with $20, what is advisable leverage? पहला आपका 22 days तो complete करो सुमित, उसके बाद trading पे आओ. Complete your 22 days first. Good job. To start the live analysis, you have to complete 22 days first. Then the live analysis of 1 month. Day 3 of 22 now. Overwhelming information is flooding. Imran, look for an add-on, not now. Wick creation नीचे आने दो. Risk to reward range में generate होगी. उस range of action से execution देखना. Add-on quantity के लिए. Sir, in the live screening, you are very fast to understand at the start of the day. So it took you 1 month, 20 days to say this. कि my screening is fast. So normally through big information, very casually, you have to question. So normally through big information, very casually, you have to question him. Venkat, I will give you a really good option, okay? So what you can do is playback speed screening के time पे आप कर लो -2. तो मैं फास्ट बोलता रहूंगा तो भी वो स्लोली आपको समझाता रहेगा. Okay?
Okay, sir normally throws big information very casually. You have to question him. एंड जितने भी लोग कल वीडियो देख रहे हैं ना, सीक्रेट मैसेज किसी को समझ में ही नहीं आया होगा। अगर इन डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन कल के सप्लाई एंड डिमांड के ऊपर चाहिए था तो थंबनेल के ऊपर ही था कौन सा वीडियो जाके देखना है। Yes, I did reduce the speed in early sessions. एंड योगेश आप स्विंग 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 बोलते रहते हो ना, कल का एक्सप्लेनेशन पूरा स्विंग के ऊपर ही तो था। एंड उसके ऊपर भी आपको स्विंग के बारे में चाहिए तो मैं कुछ नहीं कर सकता। And yesterday's trade is still running. This is a swing trade only, no? What movement is happening? अब हर एक कमेंट में मेरे को याद दिलाने की जरूरत नहीं है. Team is there to give me the reminder. You have said in live that you will let us know how to select the stocks, right? You don't have to give me reminder in each and every comment. So there is a team sitting to give me the reminders. Don't miss the entry means उतना 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 बड़ा थोड़ी लिखना है मेरे को. डोंट मिस द एंट्री. उसके बाजू में है देखो छोटा सा लिमिटेड सीजनल ऑफर के नीचे. With that you have to understand don't miss the entries inducement videos. एंड स्टॉक सिलेक्शन के बारे में वीडियो तभी आएगी जब मेरे को वो सेटअप दिखेगा. मार्केट इज इन द करेंट क्रैश सिनेरियो में थोड़ी मैं बता सकता हूँ हाउ टू सेलेक्ट ए स्टॉक. I've said that clearly, like that will be a live execution process what I will be showcasing you. Is this the current time to showcase? Very soon there is a recession coming in of 2025. There is multiple things that you have to keep under the consideration.
You're talking about something which is precious, which you guys will be looking for long terms. एंड लॉन्ग टर्म्स का वीडियो 15 मिनट में भी मेरे को बताना है, मेरे को वहां पे लाइव पे चलते हुए दिखना चाहिए वो. सर रिसेशंस पे थोड़ा एक्सप्लेनेशन हो जाए. डेफिनेटली इमरान, इवनिंग सेशन में करता हूँ, अगर इवनिंग सेशन में आता हो तो. नहीं तो डेफिनेटली ऑन मंडे आई विल डू दैट. ओके. 90% आई विल बी देयर इन द इवनिंग सेशन, 10% डाउटफुल है. ओके. तो resistance is always on the calibration of entire money movement, right? Because new financial year starts, with the new financial year starting, there will be always a layovers in the companies. Let it be profitable, let it be non-profitable. So it's a very vast topic to cover. अगर स्टॉक सिलेक्शन ईएमए के थ्रू करना है तो कर लो आप लोग. पूरा दुनिया बात करती है ना. Long term stocks is being calibrated under the EMA of 200 and 150. कर लो. प्रॉपर रिटेलर्स सेटअप के हिसाब से. उसमें क्या बड़ी डिफिकल्टी है. ड्रॉ करो. एक 200 ईएमए क्रॉस ओवर, एक 150 ईएमए क्रॉस ओवर, एग्जीक्यूट कर लो. क्लोज चार्ट पे इंफॉर्मेशन चाहिए, मैं दे दूंगा. रैंडमली 10 साल पुराना उठा के बता दूंगा. 10 साल पहले मैं ये स्टॉक लिया था, इधर से इधर मूवमेंट आया, इतना पैसा आया, जो कि सच है ही नहीं. एंड लोग उसमें वाहवाही देंगे. राइट. अगर वो वीडियो चाहिए तो बताओ, मेरे को 5 मिनट नहीं लगेगा एक्सप्लेन करने में.
Sir, we can see tax according to 200 EMA, but when it goes opposite to that, they say it happens sometimes. पीओए रेंज में चला गया ना मार्केट. सेकेंड हाफ में देखना है तो देख लेना आईडी के लिए इंडियन मार्केट्स में. सर इज टॉकिंग इन sarcasm जी. वैसे 200 EMA काम कैसे करता है चेक तो कर ले. क्या डालना होता है, किधर चेक करना होता है वो इंडिकेटर. वर्षा, इंडिकेटर कहाँ पे डालते हैं ट्रेडिंग व्यू में. इंडिकेटर्स. ये कुछ और ही आ रहा है. वॉल्यूम सिलेक्शन जहां से किया था वहां से, मैं थोड़ी किया था, वो आप लोग करके रखे थे ना. कैंडल आइकॉन, ये वाला क्या है. ओके इंडिकेटर्स. थैंक यू थैंक यू. किस में जाना है उसमें. टेक्निकल्स. हाँ मिल गया थैंक यू. ये में भाई इसमें भी तीन तीन EM है. एवरेज चाहिए. ओके. 200 का है. ये क्या है, इतना लैग में क्यों दिखा रहा है. Why is it showcasing in lag?
ब्यूटीफुल। जो लैग इंडिकेटर था वो चेंज हो गया। एक नंबर। बट इवन दिस इज वर्कलेस। ये मेरे को बोल रहा है वेट करने के लिए कितना पिप्स की मूवमेंट। 270 पिप्स। नॉट वर्थ इट। सर आप ट्रेडर हो या कोडर? क्यों, क्या हो गया? वीपी, व्हाट हैपेंड? भाई ईएमए के बीच में ना 300 पिप की मूवमेंट ड्रॉप आ रही है, क्या बात कर रहे हो? कहाँ पे एंट्री लोगे? 530 पिप्स की ड्रॉप है। आप लोग यहाँ पे 50 पिप होल्ड नहीं करते हो, आप लोग 500 पिप की एसएल होल्ड करोगे? हाँ वेंकट, कल आपने एक डायलॉग मारा था, आई एम सो ब्रिलियंट, मैंने राइट जगह पे एग्जिट किया था। उसके जस्ट 15 मिनट पहले, सॉरी 30 मिनट्स पहले एक एक्सप्लेनेशन दिया था, इस कैंडल से मूवमेंट हमें 200 पिप्स की मिलने वाली है। अब बोलो। It's not about what you look and how you look. It's about how you trade. I know it was a joke.
So I also said you in a joke way only that the market took a movement of the movement of 200 pips. He is a author, investor, trader, coder, chef and many more. किसके बारे में बात कर रहे हो बोले? Sir, you have written a book. Yes, three books till date. Shows, sir. Stream will be there for next 15 minutes. जो भी doubts है, please do ask. These are the two books. Asian subcontinent, sorry, Asian continent में third book launch होते हैं, that will also be popping out in Amazon. Okay. CPD तक होल्ड करो ना. हाँ.
सीपीडी क्या है? किसने बोला सीपीडी? एसपीडी के बारे में बात कर रहे हो? सीपीडी करके क्या है? पता नहीं, चेक करना पड़ेगा। एसपीडी, स्पाइक पैरामीटर ड्रॉप। बोला तो, व्हाट इज एसपीडी? स्पाइक पैरामीटर ड्रॉप। स्पाइक पैरामीटर ड्रॉप। And what is it? TP1 will always be in the calibration of two POS. मेरे को एक चीज बताओ, आप लोग बेसिक से समझाओ बोलते हो ना। आप लोग 3 साल, 4 साल, 5 साल से आईटीसी, स्मार्ट मनी सब फॉलो कर रहे हो। मेरे को फेयर वैल्यू गैप का बेसिक समझाओ प्लीज। या ईएमए कैसे आता है उसका बेसिक समझाओ प्लीज। या फिब रिट्रेसमेंट का बेसिक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट क्या है समझाओ प्लीज। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का बेसिक मतलब क्या है समझाओ। एसएमए जो फॉलो करते हो, एसएमए का बेसिक स्टेप ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए समझाओ। आरएसआई फॉलो करते हो, आरएसआई कैसे प्रिजर्व हुआ या प्रिवेंट हुआ समझाओ।
No, no, I'm not talking about you, Imran. I'm just asking people. I just got few comment screenshots right now. वो comments पढ़ने के बाद मैं ये पूछ रहा हूँ. Everything is in form of indicators, no explanations. ओके, चलो ईएमए फॉलो कर रहे हो, ईएमए का मेजर रूल ऑफ एक्शन तो बताओ क्या है? आरएसआई फॉलो कर रहे हो, आरएसआई का मेजर रूल ऑफ एक्शन तो बताओ क्या है? एवरीथिंग इज इन फॉर्म ऑफ इंडिकेटर्स, नो एक्सप्लेनेशंस, बताओ. व्हाई इज फेयर वैल्यू गैप क्रिएटेड, कोई बता सकता है एट फर्स्ट प्लेस? इन डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मांगते हो ना, बताओ क्या है? बेसिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बता दो मेरे को. व्हाई डज अ सपोर्ट जनरेट और व्हाई डज अ रेजिस्टेंस जनरेट, वो तो बताओ. इतना बेसिक बेसिक करते हो ना आप लोग, बताओ ये तो बताओ. थोड़े लोग स्ट्रीम में भी है, बताओ. Who said RSI is based on mathematical formula? RSI is based on division surplus. When big players enter with bulk orders, FVG gets created. Beautiful, yeah, beautiful. Nitish, you know the formula of RSI? Yes, ma'am. आपको चाहिए क्या?
This is the formula. अरुंधति क्या लिखा है? RS is equal to 100 divided by, sorry, 100 minus bracket open 100 divided by 1 plus RS. RS is called as relative strength. राइट, रिलेटिव स्ट्रेंथ कैलिब्रेट करना है तो आपको एवरेज गेन्स को डिवाइड करना होगा एवरेज लॉस ओवर द पीरियड टाइम, डिपेंडिंग किस टाइम फ्रेम पे आप यूज कर रहे हो, दैट विल बी द पीरियड्स दैट यू विल बी सिलेक्टिंग. टिपिकली हम लोग यूज करते हैं 15 डेज से लेके 37 डेज तक. एवरेज आउट कर लो, उसे कंप्यूट आरएस कहते हैं, राइट. एवरेज गेन डिवाइडेड बाय एवरेज लॉस. तो प्लगइन आपको निकल के आएगा विद 100 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर एस डिवाइडेड बाय कंप्यूट आर एस इंटू 1, द एक्चुअल वैल्यू. हैव लिटिल बिट नॉलेज ऑफ दैट. तो वो जाके पूछो जो क्रिएट किया है एफईजी. इज योगेश करेक्ट और यू सेड इट इन sarcasm? करेक्ट होता तो मैं सच में शाबाशी. 3000 पॉइंट का मूव, सॉरी 2500 पिप्स की मूवमेंट आई है ना. एक एफवीजी दिखाओ मेरे को इस मूवमेंट प्लान में. शो मी वन एफवीजी. Look, this is the chart. Show me one FVG over here. This is 15 minutes. I have given you option of 3 days, 9th, 10th, 11th. जो हम ट्रेड में है ना वो तीनों दिन का दिया. दिखा दो एक एफवीजी over here. Show me one support and resistance zone. Show me a fib calculation entry point. Fib retracement के हिसाब से.
चलो यार, वो भी छोड़ दो, ट्रेंड लाइन के हिसाब से एग्जीक्यूशन दिखा दो। ट्रेंड लाइन के हिसाब से दिखा दो। ओके छोड़ो, साइडवेज जोन दिखा दो। चलो साइडवेज जोन के लिए मैं और थोड़ा बड़ा स्कोप देता हूँ। साइडवेज जोन दिखा दो इसमें। चलो ये भी काफी नहीं है, पूरा अप्रैल मंथ, चलो मार्च भी देता हूँ। साइडवेज जोन दिखाओ। ट्रेंड लाइन अलोकेशंस दिखाओ। फेयर वैल्यू गैप्स दिखाओ। डायरेक्शनल मूवमेंट में तो भी फिब रिट्रेसमेंट काम करना है ना। कहा क्या है आपने? Anyways, it was waste of time. Even then, trade fearlessly, follow the risk to reward with following risk to reward. Make sure that control on your emotions. जीतने से खुशी मनाना, हारने से दुखी हो जाना is not the quality of the traders. Be in the directions of the math. Sit calmly till the targets are hit. No FOMO executions, no running candle executions. Protect your capital. All the new members do the back testing of 1.5 years, 1.5 years of forward relay bar testing, 1 month of live analysis, then come with a small capital to build the confidence and grow the account. Then get the real value following the risk to reward, and have the patience and calmness while you're in the trade. If the market is not giving the indications, don't execute the trades. Trade what you see, not what you think. Be always in the directions of the math. This is Nitesh signing off. मिलते हैं शाम पे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय.